Hello students, welcome to our channel. Today we shall discuss 10th class first flight section poetry. I welcome you to our channel higher classes. Today we shall discuss the poem Dust of Snow. The complete explanation of the poem you will get here in Hindi and English. As you can see in the picture, Dust of Snow. This is the poem composed by an American poet, Robert Frost. Robert Frost is a famous uh, American English poet. Although the poem is very small, it contains only 8 lines, but in the short span of 8 lines, the poet is able to express his thought, his content, that every moment in the life has some value, has some virtue, although there may be some trivial things, or just like the dust. Dust means some particles of snow. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Hemlock is a kind of poisonous plant, a plant that have some poisonous effect, and dust of snow means the particles of dust. And there are two things presented by the poet in the poem: crow and snow. One, the crow is the symbol of some trivial thing in the life, and snow is also the symbol of trivial thing, or an event that happens automatically in our life that encourages us. The way a crow shook down, the meaning of shook down is moved with a jerk. Shook down means move. If something moves with a jerk, then we can say shook down. Or dust of snow, I have told you the particles. Means the poet explains that the poet is sitting under a hemlock tree. He is sitting under a hemlock tree, and there is a crow over there on the hemlock tree, on some branch of hemlock tree, and the crow shook down. The crow shook down by flapping its wings the dust or the small particles of snow over the body of the poet. That gives some sudden change in the mood of the poet. The poet was in depression or in a sad mood, as has been explained by the poet in the poem. And when he says, has given my heart a change of mood, means when the crow flaps its wings and try to make itself comfortable, although there is a lot of cold around in the atmosphere, there is a lot of cold, and but in spite of such a coldness, the crow tries to make itself comfortable, that change his mood, and saved some part of a day I had ruined. Ruined means to ruin, barbad karna. So the poet says that the flapping of the wings of the crow changed the mood of the poet and gives him an inspiration and saves the part of his day that he had ruined. With the help of these lines, जो है कवि ये कहना चाहता है कि एक जैसे कि वो एक कौवा था, और कौवा जो था एक हेमलॉक प्लांट के ऊपर बैठा हुआ था, और कभी उसके नीचे बैठा हुआ था, हेमलॉक प्लांट के नीचे, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था। हेमलॉक एक पॉइजनस प्लांट का नाम इसने विशेष रूप से इसलिए लिया है ताकि कवि ये बताना चाहता है कि जीवन में कई बार ऐसी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती हैं जहां पर आप अपने आप को निराश पाते हैं। हेमलॉक इज ए सिंबल ऑफ सम डिफ़िकल्टीज और द प्रॉब्लम्स और द हर्डल्स दैट स्टॉप्स आवर लाइफ, that gives some difficulties in our life. So the poet says with the help of hemlock tree, hemlock एक सिंबल है, कवि ये कहना चाहता है
कि जीवन में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जब आप बहुत सारी मुसीबतों में पाते हो अपने आप को, बहुत सारी समस्याओं में पाते हो, लेकिन आपको निराश नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से छोटी से छोटी चीज़ें भी हमें इंस्पायर कर सकती हैं और आगे का हमारा जो है जीवन बचा सकती हैं और हमें कुछ रास्ता दिखा सकती हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे कौवे के विंग्स को फ्लैप करने से जो पार्टिकल्स ऑफ स्नो कवि के बॉडी के ऊपर गिरते हैं और उससे कवि का जो है मूड बदल जाता है और उसके जो है आगे का जो है टाइम बच जाता है। ठीक उसी प्रकार से जीवन में हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हम जो है समस्याओं को सामना करें तो उनसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कवि यहाँ पर कहना चाहता है। तो बच्चों इसका जो थीम है कविता का वो है स्मॉल थिंग्स कैन मेक ग्रेट चेंजेस इन आवर लाइफ एंड दे कैन मेक आवर लाइफ मोर लाइफ and more energetic, just like the dust of snow, the particles of dust of snow that falls over the body of the poet. And the symbolism is also used here. The crow represents the trivial things in life or an event that happens automatically, or snow is also the symbol of some difficult situation, some hurdle in life. So मैं सोचता हूँ कि आपको ये जो है पोएम अच्छे से एक्सप्लेन हो गई होगी। इसमें अगर कोई और समस्या हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और यदि आपको हमारा जो वीडियो है पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इफ़ यू हैव एनी फीडबैक, गिव द फीडबैक इन कमेंट। थैंक यू।